Well, we have seen a huge controversy has been erupted over the statement which has been issued by Rahul Gandhi, and after that we have seen the defense minister has already given clarification. We are reporting from Rampura Sardara village where the family lives here, and the Congress leaders he is with us, so we will also talk to him. So a lot of statement which has been given, a lot of controversy has already been erupted. How do you see? Because defense minister has already made it very clear, amount has already been given to the family members. I think that statement is completely incorrect. And as you know that our leader Shri Rahul Gandhi ji has raised this in the parliament. And first of all, the issue is that there are two kinds of Shaheed Modi has created in this country. One are Agniveer Shaheed and one are the regular army Shaheeds. So why is this disparity? There is no pension for the family of Agniveer Shaheed. There is no medical benefit for the family of Agniveer Shaheed. There is no canteen facility for the family of Agniveer Shaheed. If you see, as a normal soldier, all the facilities that they get nothing here. And apart from that, I think the whole question about compensation, if you and I have an accident and we have a bank insurance, we will get some compensation from it, no? So what they have got is that compensation and a compensation from the state government, but the ex gratia amount has not been paid to that, and that's very clear. So it's a bank. So we have a family members also. The father of that martyr, he is with us. So we will talk. तो क्या पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं? That is first question. पहले पैसे की बात है ही नहीं, स्कीम बंद करने की बात है, और पैसे आप क्लियरली पूछे कितने तो किसने दिए? कितने पैसे मिले हैं, क्या मिले? क्योंकि कल हमने देखा पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोलते, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर बोलते, तो कितने पैसे आए हैं? क्योंकि आर्मी ने क्लियर किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया है, सारे पैसे भेज दिए हमने। नहीं सर जी, सानू तो उसका 50 लाख का इंश्योरेंस बीमा मिला। एक 50 लाख का बीमा है जी, जो इंश्योरेंस बीमा ICICI बैंक में मिला है जी। उसके बाद 48 लाख आर्मी की तरफ से आया, 48 1 लाख का मैसेज कल आया, यही मिला। बाकी सानू तो यही कहने भी अग्निवीर योजना रद्द होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। बाकी सानू पेंशन वगैरह, कंटीन कार्ड वगैरह ये मुहैया होना चाहिए, परिवार में सहूलत मिलनी चाहिए जो भी रहती है। जो सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि जितना अमाउंट कहा था उतना मिला है कि नहीं, जो सबसे बड़ी बात है। अग्निवीर स्कीम पे तो सवालिया चिन्ह लगातार आप लगा रहे हो, कह रहे हो कि वो एक अलग तरह के आर्मी जवान हो गए, एक अलग तरह के हो गए, लेकिन क्या पैसा पूरा मिला है कि नहीं? नहीं, ये पूरा पैसा ही 48 लाख मिला, या बीमे का पैसा मिला, और कोई नहीं मिला। अभी बोल रहे हैं आर्मी से पैसा 60-60 लाख वो आएगा, आहिस्ता से मिलेगा। वो मिलेगा अभी? हाँ मिलेगा, अभी नहीं मिला, ना जाने कब मिलेगा। So question are being raised over this scheme also. You are talking about the scheme also. We have more family members also. So what is the difference? Because one side they are saying that they are not able to get the pension, they are not getting the canteen card benefits. That is the main issue. See, the issue is that this scheme is anti-India. It is anti-India security. And if you see the family is in a lot of distress. And I think media has been troubling them since the morning, since the issue has broken up, and they have not had food. So I don't want to trouble them more. But you should, if you want to ask them, you can ask them. तो क्या लगता है, क्या सरकार ने पैसा पूरा दे दिया है आपको, और क्या बेनिफिट्स नहीं मिले जिसके कारण आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो अग्निवीर स्कीम है इस पे सवालिया चिन्ह लगा है? सरकार ने पैसा देता ठीक है सर, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ क्या कारण है, क्या कारण है, क्या मतलब ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? 6 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ? ਜੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। पर पैसा पूरा आ गया आपके अकाउंट में कि जहाँ अभी आना है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਜੋ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ करवा दो। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। अजय कुमार जी के माता जी भी हैं, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि अग्निवीर स्कीम में क्या प्रॉब्लम है?
ਅਗਨੀਵੀਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੀ? तो पैसे जितने सरकार ने कहा है उतने मिले है कि नहीं? ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ So, well, we can see this is the reaction from the family members. They are putting a lot of question over this Agniveer scheme. They say the amount which they have got, they have already been revealed, and what they have learnt, around 68 lakh rupees are yet to be received by the family members. So, let's see that what type of amount has been given by the army. That will be that have already been clarified, but a lot of question as well as the counter question are being raised over this issue. So let's see that how the government is going to deal with this issue at this point. Back to studio. Right.